So, folks, the first phase of elections in Gujarat are over. The results are extremely surprising and confusing. The voter turnout in the urban centers, quote unquote, the urban centers, which is controlled by the BJP, has been abysmally low. Now, what does that say? Some psephologists will say that that there is no anti-incumbency, low voter turnout. What low voter turnout suggests that the BJP will win. But more often it has been said that a lower voter turnout in seats that are controlled by the party in power is khatre ki ghanti, right? On the other hand, the South tribal belt, which remember also is adjunct to the Bharat Jodo Yatra, it's an Adivasi belt where even though Modi and the BJP have done a lot of work, there's a lot of groundswell against them moving in from that area. And there the voter turnout has been high, and it suggests that probably Congress's strategy of a low-key strategy of going house to house, having nukkad sabhas, has actually worked. And while they haven't come out with these big shows, which now the Congress is beginning to show up also with Kharge and Mahesh what's the gentleman name? Jagnesh Mevani are beginning to show an impact or at a bigger scale. But this has been done extremely surreptitiously, and Modi himself had mentioned it. And the Khalbali, essentially that 50, the long 50 km yatra and this fancy car, let him get out and walk, right? Major Gujarat cities across 19 districts to vote today. Jamnagar, interesting, is a tough fight, even though as Ravindra Jadeja's wife, 61% turnout in Gujarat phase 1, a drop from 2017. Tribal areas ahead of others in voting. Won't let women queue up with men. A Jamnagar village boycott. Polls sharp drop in Saurashtra area, even in Morbi that saw a bridge tragedy recently. Both the BJP Congress claim the low numbers are good for them. Well, we will wait and see, folks. So what I can say is that where the numbers have gone up, it seems to be advantage Congress, and in the cities where they've gone down, one thing is becoming very clear is Aam Aadmi did not come out to vote. But let's wait and see. Anything can happen with this government. Cheers. मैंने पहली बार जिंदगी में एक सबसे बड़ा मैंने गलत काम किया है, वो मोदी को वोट देके। उसके बाद आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया हूँ, और आज के बाद 100 साल के बाद अगर जीत रहूँगा, मैं उनको वोट कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरा गला भी काट दे, अभी मेरे घर पे कुछ भी हमला करे, कुछ भी करे। लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात में एक सबसे अच्छा काम किया कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया। गोबर, इसको ना पढ़ना है, ना असली जानकारी लेनी है, ना सरकारी कुछ आंकड़े देखने, कुछ नहीं करना है। सिर्फ वहाँ से एक कुछ भी फेक ऑडियो है, वीडियो है, उसको सर्च कर देना है। मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता मोदी जी कि मेरे पास डिग्री कुछ नहीं है। कम से कम लोगों को अंधभक्ति से निकालना तो पड़ेगा सर। देश पूरा खड्डे में जा रहा है, खड्डे में जा रहा है, किसी को दिखता नहीं है लेकिन जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है और मैं हूं इस वक्त सूरत में। खास मेहमान का परिचय ये है कि ये सूरत में हीरो का जो कारोबार होता है, उस कारोबार में कारीगर के तौर पर जुड़े हैं। उस कारोबार से इनका रिश्ता ये है कि इनके हाथ हीरो को तराशने में, हीरो की पॉलिसिंग में। विकास की आप बात करते हो ना, इसलिए मैं बोला विकास हुआ है। 150 आदमी मर गए, घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का काम दे दिया, वो विकास हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि बस हाथ दौड़ गए भाई, हमें ये नहीं चाहिए ये अब बीजेपी। अब क्यों बस हमें पर नहीं चाहिए, नहीं बहुत हो गया, बस तानाशाही हो गई है भाई, दादागिरी कोई समझ। अब जो करोड़ों रुपए का जो ड्रग्स का धंधा होता है गुजरात में, हमारे लड़के लड़की बिगड़ रही है, तो वो पकड़ नहीं सकते, तो उसका 50 दिग्गजों को केंद्र में से इधर प्रचार के लिए लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? कुछ किया नहीं इसलिए, वरना वोट मांगने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही मिल जाएगा। पीछे जो उसके जो कार्यकर्ता है ना, उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है पैसा बनाने के सिवा। भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ गुजरात में, पूरा भ्रष्टाचार हुआ। किसी मोबाइल वाले को भी लेके आए कि इनका रिकॉर्ड करो, इनका रिकॉर्ड करो, क्योंकि इनको लगा कि ये जो बोलेंगे उसका मैं कुछ काट दूंगा। नहीं है कोई सुविधा, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं कोई लाइब्रेरी है। तुम बराचर में हो? हाँ, मैं तो बराचर में हूँ, वो तो सही है। हम हैं अभी सूरत जिले की बराछा सीट पर, और ये So some of the voting percentages I can tell you are here. Narmada 68.09, Surat 57.83, Bharuch
63.08, and Dang 64.84. Interesting here is Surat, whether some of the tapes that I've played out of interviews done by Ajit Anjum clearly show that Surat, where the BJP had swept 19 of 19 seats, or 18 out of 19 the last time, and critical for their assault to even reach 1999, to reach 99 seats, is in trouble because almost everybody he interviewed was anti-BJP. This is all the workers of the diamond and in the diamond industry, etc., were clearly also suggesting that the gun was put to their head. So they were asked, why do they then, if they don't want Modi, why do they go for all these huge rallies? He says, because the sage tells them that if they don't go, they're going to lose that day's pay. And also apparently in the last time Surat was turned over, when BJP was in trouble, using the same methodology, that they were told that they will not be paid if they don't vote for the BJP. But this time there seems to be a silent wave. And that's the reason why he has to come up with these shenanigans. At 50 km, Modi to lead India's longest city roadshow in a car. He can't walk half a kilometer, right? PM has 7 rallies scheduled. A family of 81 in Gujarat that lives together, votes together. Rajnath, Nada lead as BJP intensifies Kargil attack. All boomeranging. Rajnath, Thakur fellow, Nada, Pandit fellow. Not gonna work. Ravana. Kaun aaya Ravana? And then they say, Cheetah. No. They're saying, Kaun aaya Gujarat ka sher aaya. It's more like I thought, Cheetah aaya earlier, right? PM leads 50 km roadshow through 13 constituencies. And then he's come out with this sympathy. I want sympathy, folks. कि पहले बोलते थे महंगाई, आज तो महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं कोई जगह पे। इस बार हम सत्ता पक्ष को नहीं, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। गुजरात मैंने बनाया, कहाँ आप मेहनत करने आए थे? इधर पब्लिक बनाया, लोगों को उल्लू बना के वोट लेके चले जाते हो। इतने साल कहाँ गए? के बाद खुश नहीं किया जा सकता। सिर्फ मोदी ही आदमी है, हमारे वर्कर कोई आदमी नहीं है क्या? महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी 1200 रुपया बढ़ गया बाटला का। अभी वो कानिया रामदेव बोला तो 35 रुपये में मोदी पेट्रोल देगा। अभी आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमें लिख करके कई कंपनियों ने उसके वर्कर्स को ऐसा बोला है, अगर आप रैली में नहीं गए तो ये दिन का पगार आपको नहीं मिलता। बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी जैसा है आप लोगों का। हाँ, वैसा ही है। गुस्से में हूँ मैं, बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मीडिया वाला ओनली फॉर मोदी को ही दिखाते हैं, ओनली फॉर मोदी को, क्योंकि पैसा ही भाजपा सरकार के। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ डायमंड सिटी सूरत में। डायमंड सिटी इसलिए So now all that's left is gaining sympathy. And in yesterday's speeches in Gujarati, he's lied through his teeth. He's suggesting that some person in the Congress wants to blow him up. And he's said that the Congress is, some people have called him cockroach. I mean, is he for real, man? And he's suggesting, and I mean, that's what the intent is, right? That a gali on him is the gali on a Gujarati. Go figure this out. And this is the great part, right? Ravan Jai. As Modi targets it, Congress says stick to issues. But let me talk about the Ravan Jai. Karge basically meant that you don't have 10 heads like Ravan, right? But even then, I think we're insulting Ravan by equating him to Modi. Because Ravan was one of the biggest Shiv Bhakts. The same may not be said about Modi, even though he was seen in this gufa and he's trying to think he's the avatar of Shivji, right? Okay. Congress has heaped abuses on me by dozens, but never repented, says PM. Like, why would anybody repent them? Firstly, because he never abused them, right? Gujarat will give befitting reply to those who abuse Modi, says Shah. This is all what is the bottom line. The country is being conned because of this. Just this, right? Congress attacks directed at me, but tantamount to insulting Gujarat, says PM. Oh, really? Right? What he is doing is tantamount on insulting the rest of the country and the intelligence. And it's really funny, right? I don't even know whether he's lettered. I don't know whether he knows how to write. There's a funny video that's doing the round where somebody's got a video which I'm going to play tomorrow where he's pretending that he's writing. Right? And then you have this competition in Congress to abuse me. It is mental balance loss, says PM. I would say if there's a mental balance loss of anybody, it is the Pradhan Sevak, folks. Let's just face the truth. नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब चंद दिन रह गए हैं गुजरात के नतीजे आने में, या यूं कहिए गिनती के दिन रह गए। और जानकारों का कहना है कि अगर मोदी जी आखिरी वक्त पर कोई करिश्मा करते तो गुजरात जीत सकते हैं, वरना मोदी जी की मुट्ठी से उनका ये गढ़ निकलता दिख रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे आए हैं लास्ट वीक, उसमें यह कहा गया है कि पिछली बार 2017 में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उससे भी कहीं ज्यादा कम सीटें इस बार बीजेपी को मिल रही हैं। यानी कुल मिलाकर
बीजेपी का रथ चुनाव की दलदल में फंस रहा है। और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप गुजरात के इन वरिष्ठ पत्रकार को जरूर सुनिए क्या कह रहे हैं ये बीजेपी के अपने सर्वे के बारे में। इनके अभी तक का मतलब लास्ट वीक तक का इनका जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं जो है इनके पिछले अचीवमेंट से नीचे बता रहा है। अब सच तो यह है कि इस बार मोदी जी को पूरे गुजरात में कड़ी टक्कर मिल रही है। शहर के बाहर यानी देहात इलाकों में कांग्रेस बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। और अगर आप शहरों की तरफ आएंगे जो बीजेपी के गढ़ हैं, तो वहां पर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने नाक में दम कर रखा है। और सबसे बुरी खबर मोदी जी के लिए सूरत से आ रही है। वो सूरत जहां पिछली बार मोदी जी ने सारी सीटें स्वीप करके आखिरी वक्त पर चुनाव जीत लिया था, उसी सूरत में आज की तारीख में जो हाल है आम आदमी पार्टी का, उसे देखकर पसीने छूट रहे हैं गुजरात में बीजेपी के हर बड़े नेता। आप बहनों मांगे, आप माताओं मांगे, आप युवान मांगे, आप बेरोजगार मांगे, आप किसान मांगे, आप दादा मांगे, आप पुलिस मांगे। अब ये जो भीड़ है या भीड़ का जो समंदर है, ये सिर्फ सूरत की सूरत नहीं है। जहां जहां आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है वहां पर भीड़ है, और जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है मजबूती के साथ वहां भी भीड़ उमड़ रही है। अगर भीड़ कहीं नहीं है, कोशिश हो रही है। इनके अभी तक का मतलब लास्ट वीक तक का इनका जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं जो है इनके पिछले अचीवमेंट से नीचे बता रहा है। जो मिश्रा जी ने कहा, इनके सारे सर्वे है दीपक जी, ये इनको उस मैजिक फिगर पे नहीं पहुंचा रहे हैं जिसमें सरकार बनती है। 99 से तो नीचे आ ही रहे हैं, लेकिन ये 99, 92 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा नर्वसनेस का कारण है। So the Congress is right about suggesting that, let's face the reality of unemployment, high prices, berozgari and stuff like that, right? And you know what the government is intent on doing, having compromised the Statistical Office of India, CSO, and completely trashed its reputation, is trying to keep playing with numbers. And numbers don't lie, right? Okay, we have this Q2 GDP growth in line with RBI estimate at 6.3. Now, what do you mean by that, right? RBI estimate was 7.8, 7.8, then was 7.5, now it's 6.3, now it says it's in line with that 6.3. It's not saying, they're not telling the reality that it's going down all the time and we are being downgraded by all foreign financial institutions, right? Now, how does this cannot happen? Unemployment rates rise to 8% in November CMI. I have no idea. And then you have this high input prices hurt manufacturing, pull down Q2 GDP growth to 6.3%, which is the reality. And this is what the other side is trying to do. Upswing in services sector, but SMEs and exports to slow manufacturing. And that really is the reality, because this is how they try and spin the game, right? Q2 GDP growth in line with RBI estimate at 6.3. That's not the whole truth. In fact, that's a white lie, right? And then, folks, this is the most disturbing thing. It is front page news in Indian Express. Hear this and hear this with open ears. LIC bets on Adani over 2 years, steadily increases holding in its group company. So now we know, folks, whose money is being used to increase Adani's share value. It is your money, it is my money. It is LIC. Just imagine if the stock market crashes. What's going to happen to LIC? Folks, and this is on the front page of Indian Express, and they've said it, while they've said it in a positive manner, the message they're trying to send is extremely disturbing. Your own money being used to drive up Adani shares. We always wonder who really is investing with Adani. You got it, folks. LIC and poor people of the general people who buy life insurance policies. Okay? And this is going to be a game changer if he's given. And that's why all the names being put up by the collegium are not being accepted. A record 19 Supreme Court judges to be appointed in DYC's tenure. Now, this is equivalent to what happens in the United States when Supreme Court judges are appointed, right, by whichever government. Like Trump had a field day appointing the maximum and turning the entire tide of the color of the Supreme Court in the United States from left to right
as is what happened will happen now if Chandrachud plays his games right.